Hello students, welcome to my channel. This is Satyan Kumar Mahajan and this is the chapter of chemistry. This is the first chapter of your syllabus in chemistry. The classification of matter. The topic is basically some basic concept of chemistry. Okay, so in basic concept we are going to discuss classification of matter, then properties of matter, then uncertainty in measurement, and then laws of chemical combination, and then atomic and molecular masses, and of course mole concept and stoichiometry, and finally the chapter will be finished. So the basic concept means what? First of all, we have to know the matter. Matter is divided into gas, liquid, solid, बोस, आइंस्टाइन, जो मटेरियल होता है जिसको हम बात करेंगे आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में, एक आएगा प्लाज्मा. ठीक है, तो ये सब जो मैटर हैं जिनको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, तो बेसिकली आपका जो कंसर्निंग चैप्टर है, जो मटेरियल है, मैटर है, वो है गैस, लिक्विड और सॉलिड के लिए. तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन फर्स्ट, that matter is made of what kind of composition, their structure, properties of matter and changes, whatever changes they undergo. जो भी मटेरियल जिस चीज़ का बना हुआ है उसके अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है. ओके, तो अगर हम आपको डिफाइन करना पड़े कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, तो आप क्या बताओगे? कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका अपना पर्टिकुलर मास होगा, एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर आप उसी को कहते हैं जो कोई सर्टेन मास होगा और एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उसे हम क्या बोल देते हैं? मैटर. अब आपको होगा कि गैस तो दिखता ही नहीं है, उसका कौन सा स्पेस है? ऑफकोर्स है, अर्थ एक वॉल्यूम है, राइट? और उसमें कहीं ना कहीं चाहे जिस स्टेट में हो कोई भी मैटर, लेकिन वो स्टेट तो है ही ना. तो चाहे हम इसे बहुत सारे हम लोग बात करते हैं ना, बोस कंडेंसेट पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो मैटर है. ज़रूरी नहीं कि जो आपको दिख रहा है वही मैटर है, जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी मैटर में ही कॉन्स्टिट्यूट होता है. अब देखें, हम बात करें एक एक करके, तो हम एनिमेट करेंगे पहले इस चीज़ को. एनिमेशन में आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमेशन. Have you ever wondered how the food in our body converts into energy? How medicines cure illnesses? Or how fuels help in driving vehicles? Answer to all these and similar questions is a single word: chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the study of the composition, structure, properties of matter, and changes that matter undergoes. What is matter? Anything that has mass and occupies space is known as matter. Before we learn more about matter, it is important that we know the importance of chemistry in our daily life. It is interlinked with other branches of science and plays an important role in our daily life. How important is it in our daily life? Let's explore. You can just pause the video Chemistry plays and note down anything which is given in this slide. Basically, pause the video and anything, whatever being stated in the form of animation, you can write it down as your notes. So here you can get the very concise and informative notes. Okay, just pause the video and get the notes. a major role in identifying the weather patterns, manufacturing fertilizers, alkalis, These are all chemistry, acids, chemicals, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, other inorganic and organic chemicals, and new materials that contribute in a big way to the national economy. Meeting human needs in producing food, healthcare products, and other materials aimed at improving the quality of life. Producing superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, and large-scale miniature of solid-state devices. Synthesizing safer alternatives
to environmentally hazardous refrigerants such as CFCs, chlorofluorocarbons, responsible for ozone depletion in the stratosphere. एंड व्हाट इज CFC? CFC आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC। आप जनरली बोलते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बेसिकली जो कंपाउंड बना होता है वो एक कार्बन पे 2 फ्लोरीन, राइट, और 2 क्लोरीन पे बने हुए होते हैं। CFC बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हैं CFC वो ये वाला है, क्या बोलेंगे इसको, 1,1, या ऐसे कह सकते हो डाइक्लोरो मेथेन। एक कार्बन कंपाउंड है, 10th में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्ली नॉमेनक्लेचर में। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ। अब एक ही कार्बन पे क्या लगे हैं, 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, तो आप क्या बोलोगे, डाइक्लोरो। या सिंपली जो पहले क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकली पहले C आता है देन F आता है, तो क्या आप क्या बोलोगे, डाइफ्लोरो मेथेन, राइट। तो मेथेन, तो सिंपली नाम दे देंगे डाइफ्लोरो मेथेन। तो CFC एक ऐसी गैस है जो कि हम आपको पता है कि ये फ्रिज और एसीज में इस्तेमाल होता है एज अ कूलिंग एजेंट। ओके, तो ये बेसिकली कहा जाता है कि ये CFC की रिएक्शन होती है, CFC प्लस O3, और ये CH3 ओजोन लेयर से हमारी रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और प्लस ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। क्या कैसे कैसे बन जाता है, ऑक्सीजन जो 3 तरह से बॉन्डेड था, किससे, ऐसे ऑक्सीजन से बॉन्डेड था, राइट, सपोज करें। तो अभी बेसिकली ये बॉन्डिंग थी ऑक्सीजन में, तो क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन टूट जाता है। जब एक ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, राइट, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ऑक्सीजन गैस और एक ऑक्सीजन रेडिकल सेपरेट हो जाता है। तो बेसिकली कंसेप्ट ये कहते हैं कि ये भी एक केमिकल है जो कि मैन मेड है, और ये जितना हम सिंथेसिस कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही फेटल कहा जाएगा। ओके, Understanding biochemical processes and the use of enzymes for large-scale production of chemicals and एंजाइम्स synthesizing of new materials, which have extensive uses in various fields. In order to understand the applications of chemistry in different fields and benefit from it, it is important that we know about matter. Based on the arrangement of the constituent particles, matter can exist in 3 physical states: solid, Solid. liquid and gas. liquid and gaseous. Let's look at the description of each state along with their characteristics. Solids का मतलब समझे आप? In solid state, the particles are held very close to each other in an orderly fashion. Hence, there is not much freedom of movement. Particles They पूरी तरह से have dense हैं। definite volume and definite shape. In liquid state, the particles are loosely held together and can therefore move around. They have definite volume but no definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. In gaseous state, the particles are far apart as compared to those present in liquid state. Therefore, their movement is easy and fast. They have neither definitive volume nor definite shape, and they occupy the available space of the container in which they are placed. The 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of pressure or temperature. For example, on heating, a solid changes to liquid. Suppose करो Liquid, on further heating, changes to gaseous state at normal atmospheric pressure. तो वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि फ्रीज करके टेम्परेचर डाउन कर दो तो क्या बन जाएगा, वो आइस, यानी कि सॉलिडिफाई हो जाता है। उसको आप टेम्परेचर दोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड को टेम्परेचर और ज़्यादा देगा तो क्या बन जाएगा, वेपर फेज में। वेपर क्या है, बेसिकली गैसियस फॉर्मेट है, राइट। तो गैस के फॉर्म में वेपर निकल जाए, या वेपर जिसको जो भी आप वेपर जहाँ बोलोगे वो क्या है, गैस फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर 2 ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्जन्स किए जा सकते हैं। ओके, अगर टेम्परेचर ना हो तो डेफिनेटली हर एक सब्सटेंस, हर एक चीज़, हर एक मैटर वो किस फॉर्म में होगा,
सॉलिड फॉर्म में होगा। एक डेफिनेट पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो सब कुछ कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। बेसिकली मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है, आर वी लिविंग इन अ बॉइलिंग एटमॉस्फियर, आर वी लिविंग इन बॉइलिंग एटमॉस्फियर और नॉट। दिस इज माई होमवर्क फॉर यू ऑल।